attraction of identical particles. So there are three parts in this question. Part 1, जिसमें हमें बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो लेट अस डिस्कस. तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें बताना है पार्ट 1. सो आई एम सॉल्विंग पार्ट 1. पार्ट 1 इज F electrostatic upon F gravitation for electrons. Means there are two electrons actually, और उन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन R है, और इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों में जो कूलम्बिक रिपल्शन होगा उनका रेशियो क्या होगा. Just very simple thing. Coulombic repulsion is given by 1/4 pi epsilon naught E square upon R square whole divided by G mass of electron square upon R square. So if we simplify this, then it is actually 9 into 10 raised to 9 into electronic charge 1.6 10 raised to minus 19 coulombs, और उसका हमें स्क्वायर करना है, whole divided by G which is 6.67 10 raised to minus 11 into mass of electron, that is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. And if we further solve this, then we are getting roughly it is around the range of 10 raised to 42 approximately. I have already calculated this. So this value comes close to 4 into 10 raised to 42. So you can check out this. Now in part 2, the whole difference is that we have to calculate the same thing, but for two protons. This time we have two protons. So in case of protons, we have only difference in their masses. In part 1, we use mass of electron. Instead of mass of electron, here we have to use mass of proton. The gap is same, and now the electrostatic force upon the gravitational force ratio will be 1/4 pi epsilon naught. The charge will be same, E square upon R square, but this time here we have mass of proton square upon R square. So if we solve this, then 9 into 10 raised to 9 into 1.6 10 raised to minus 19 whole square whole divided by 6.67 into 10 raised to minus 11, and here we have mass of proton which is 1.67 10 raised to minus 27 kilogram whole square. So this should be the value which comes close to approximately 10 raised to 26, in the range of 10 raised to 26. I have already calculated this. Okay, so you can calculate this. And now the part 3rd. Part 3rd is saying that at what value of specific charge Q by M of a particle. This time we are not talking about an electron, proton or anything else. We are just talking about general particle जिसके पास में कुछ Q charge और M mass उसका होगा. ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाने चाहिए. मतलब दिस टाइम दे आर सेइंग दैट कि ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है जिसमें M मास और चार्ज Q है, और दूसरा पार्टिकल M मास और चार्ज Q, और उनके बीच में R है. ये बोल रहा है कि इनके बीच में मेरे को ये दोनों इक्वेट कर देना है. तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स को इनके कूलम्बिक रिपल्शन से, क्योंकि देखिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे, है ना. बट वो जो भी हो, हमें क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलना है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी जी M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. सो जस्ट थिंग इज कि हमें Q बाई M कैलकुलेट करना है. तो टेक्निकली ये Q बाई M की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? Q बाई M is equal to actually 4 pi epsilon naught G into M, sorry not M, 4 pi epsilon naught G at under root of this, which is nothing but actually 6.67 10 raised to minus 11 upon 9 into 10 raised to power 9 and square root of this. This value comes close to 10 raised to minus 20, so nearly 10 raised to minus 10, and I have already calculated this is approximately 0.86 into 10 raised to power minus 10, and the unit would be coulomb per kilogram. This should be the value of specific charge. Then the gravitational force will be balanced by electrostatic force. So this is the problem. This was the problem number 3.1. I hope you enjoyed the video. Thank you. Keep learning.